हेलो एवरीवन वेलकम टू आसान एकेडमी मु हूँ आपनकर प्रिय श्रीनिवास सर आज आम ये वीडियो रे पूरा कंप्लीट एनालिसिस करबा आरएचटी एबे जो एग्जाम हेतिला तार फिजिक्स पेपरटा केमि थिला जदि आपण केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस देखि नांदी ताले देखंतु जाकी हमर प्लेलिस्ट जिबे सेथिरे आरएचटी सेक्शन रे सब वीडियो अछि किमिति केमिस्ट्री पढिबे किमिति फिजिक्स पढिबे किमिति मैथमेटिक्स पढिबे ठीक अछि तो एडा बोथ सीबीजेड आउ हमर पीसीएम पिलांग पई बोथ एप्लीकेबल ठीक अछि तो आपण जाकी देखि परिबे। तो आज देखो केमिस्ट्री आम जमी पोस्टमार्टम करते आज सेमती फिजिक्स करवा ठीक अच्छे आपण मैंने बहुत से पसंद कर केमिस्ट्री केमी आपको डिटेल देखी कि केमिस्ट्री को क्वेश्चन को चैप्टर आो सेक्शन रे को जगार अच्छे देखी ठीक सेमती आज मो फिजिक्स को पूरा डिटेल रे जो 40टा क्वेश्चन आमर आसला आरएचटी पेपर रे क्वेश्चन नंबर 21 रु नहीं क्वेश्चन नंबर 60 पर्यंत 40 टी जगह क्वेश्चन आपको आज देखेबी तेणु पेशेंस सहित देखो वीडियो को कंप्लीट देखो जे नुआ प्लीज लाइक कर दिंतु सब्सक्राइब कर दिंतु चैनल को आईटा देखला गोटे बिलीफ पलि आस मो उपर कहीं अन्य को भी चैनल एत डिटेल एनालिसिस किए भी करनी बर्तमान मुझे भावुची जे भी आगू कर निश्चित भाव में यू कि इन्फ्लुएंस कर तेणु मुझे आपको कहूँ कि प्लीज भलसे देखो ये वीडियोटा कहीं आपंकर फ्यूचर बहुत कम आसो ये वीडियोटा एनसीईआरटी को किमिति वे प्रिपरेशन करा जाए सेटा आपण एठु शिखि परिबे फिजिक्स रो को एरिया रु केते पोर्शन मार्क आसे सेटा भी आपण जानि परिबे सिलेबस को किमिति इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन पका जाए सेटा भी आपण एठु शिखि परिबे ठीक अछि तेन चलो तो वीडियो को देरी न करी जल्दी स्टार्ट करबा तो देखंतु आपण पे टिके मु जूम कर दूची सो दैट आपण क्वेश्चन देखि परिबे क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हला A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meters per second from the top of a multi-stored building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. Take g equal 10 meters per second square. How long will it be before the ball hits the ground? ठीक अछि ता माने एटा हमर आसी जीवो को चैप्टर फर्स्ट चैप्टर चलो तो देखैबो हम आपको एनसीईआरटी बुक समस्त जानचंदी समस्त पाखरे थिबो जदी बेटर नाइ जदी मु जेमिति एप्लीकेशन गोटे रखिछि एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशंस देखो एठी अछि तो एटा को क्लिक करिवे एनसीईआरटी बुक्स को जिबे देन क्लास 11th बुक्स देखो क्वेश्चन इमिति पक्का जाइछि माने आपण देखिले भाबे जे कि ताठो माने क्वेश्चन जे भी क्रिएट करछन ओएसएससी रो जे भी मेंबर की जे भी जहां भी जे भी क्रिएट करछन ताठो आपण फार बेटर क्वेश्चन बने परिबे कने आपण देखिले आपण मजा लागियो आपण हस लागियो देखो हम कहूछि कने आकु पूरा आज पोस्टमार्टम करिया ठीक अछि केमिस्ट्री करथिले प्रीवियस क्लास रे एबे हमें चलंदु फिजिक्स रो पार्ट 1 बही देखंदु फर्स्ट रे हमर कोन अछि एग्जाम रे आसीबो कोथरु ना मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आसीबो ओके तो चलो देखिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन देखो ए क्वेश्चन आमे अछि मु एडा को देखेबे आपन ए क्वेश्चन रे कोठे अछि देखो एग्जांपल 3.4 क्वेश्चन सेम एज इट इज अछि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ देखो मु आउट जूम कर दूची आपन देखिया पई ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग द हाइट देछि 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड हाउ लॉन्ग हाई विल द बेस राइज ठीक अछि सब डिटेल दे दिछि आंसर होबो केते 20 मीटर ठीक अछि तो द बॉल हिट्स द ग्राउंड दिछि ना द बॉल हिट्स द ग्राउंड तो देखो बॉल हिट्स द ग्राउंड रे केते सेकंड रे आसीबो बॉल हिट्स द ग्राउंड 5 सेकंड रे होना नहीं आंसर हिजो केते 5 सेकंड हला क्वेश्चन पाई गले कोठू एनसीईआरटी बुक रु आपन सेते बारंबार कोए आपन एनसीईआरटी को भल से प्रिपेयर करंदु 40 टी जगह क्वेश्चन मु देखेबी आपन आज 40 टी जगह क्वेश्चन एई एनसीईआरटी बही रु आछि सब जगह क्वेश्चन एनसीईआरटी बही रु आछि सब जगह एग्जांपल रु आछि और केतरा एक्सरसाइज रु आछि मु डिटेल रे आपन देखेबी तनु चलो तो स्पीड करके हम जिबा आगु देखिबा क्वेश्चन जगह हला गोटे क्वेश्चन आसिला सेकंड क्वेश्चन देखो द पोजीशन टाइम ग्राफ हला देखो ए चित्र डोडा अछि ए और बी अछि एठी चूज द करेक्ट एंट्री फ्रॉम बिलो द ऑप्शन देखो सेही चैप्टर रु आछि चलो डायरेक्ट फिगर टा खोजी दियौ इजीली हम मिल जिवो एक्सरसाइज रे बोधे अछि एटा राइट देखो ए और बी हला देखो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ए क्वेश्चन दा एज इट इज पका जायछि ऑप्शन भी दे देछि ऑप्शन नु टिक मारियो कोडा ठीक हला बुझि पारले
तेणु मु बारंबार आपको सब कहे कि आप एनसीईआरटी प्रिपरेशन करंतु फास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ंतु कॉन्सेप्ट हो गला तार एग्जांपल जाक भलसे करंतु कहीं जेहेतु आरएचटी रे एगुड़ा आसी सब हुए तो एसएसपी रे न आसीपारे सब किंतु एसएसपी रे जो क्वेश्चन आसीबो आकु रिलेटेड ही आसीबो ठीक अछि माने कॉन्सेप्ट तो सेम आसीबो ना कॉन्सेप्ट को बाहर कोड आसीबो ना कोन कॉन्सेप्ट पय आपण एनसीईआरटी को प्रिपरेशन करंतु ठीक अछि तो चलंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थिला हमर क्वेश्चन नंबर 23 An insect trapped in a circular groove of radius 12 cm moves along the groove steadily and completes 100 revolutions in 100 seconds. What is the angular speed? ठीक अछि insect तो चलो तो देखिबा insect रो क्वेश्चन खोजिबा ए चैप्टर जेतु एक्सरसाइज कंप्लीट हैला त आउ नथिबो ए चैप्टर ठीक अछि त तार नेक्स्ट चैप्टर जिबा देखो तार नेक्स्ट चैप्टर हम कोन थिला मोशन इन स्ट्रेट लाइन चला एबे देखिया मोशन इन प्लेन मोशन इन प्लेन मान देखो से जो एग्जाम रे जो क्वेश्चन जो पकै जंदी चैप्टर वाइज गोटे पर गोटे चैप्टर आपण खोजी खोजी जे पूरा सीरियली चैप्टर रे पाई जिवे सब जगह ठीक अछि सब जगह आपण पाई जिवे तेणु एमिति तो एनालिसिस के भी YouTube रे करि नथि मु जा भाबुची आ जदी भी के करथो बहुत रेयरली की करथिबो जदी की करथिबो एन इनसेक्ट तर मु सब क्वेश्चन आपण देखै देबी तेणु टिके पेशेंस रखंतु आपण आउ जदी भल लागुची वीडियो श्योर लाइक करंतु आ कमेंट रे जहाँ आपण खोजुछन एक्चुअली माने आपण जो रिलेटेड दरकार टॉपिक तो आपण से टॉपिक को कमेंट सेक्शन मेंशन करंतु आ जदी एई वीडियोटा भल लागिची ताले श्योर आपण एप्रिसिएशन पे मते किछि भी भल जिंस लिखि परिबे कमेंट रे ठीक अछि सो दैट हमको मोटिवेशन जते अधिक मिलो सेते इच्छा हुए ए सब कंटेंट बनाया पे तो चलंतु एन इनसेक्ट काई कोठी आस गला इनसेक्ट खोजबा An insect trapped in a circular groove. देखो example 4.10 radius 12 cm moves along the groove माने क्वेश्चन एज इट इज आछि एज इट इज क्वेश्चन आछि एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चन आछि आ सब जाको 40 टी जाको एमिति नै जे आपण हां माने दी चारटा क्वेश्चन एनसेट रहछि सिमिति न 40 टी जाको क्वेश्चन ए बही भितर ही आछि सब जाको एग्जांपल एक्सरसाइज रो आछि तण जे कर देकी पळी छि एग्जांपल से तो आराम से 30 प्लस श्योर मारी के आसीबो हला हमो फिजिक्स डिफिकल्ट लागे सत आ टिके डिफिकल्ट भी अछि फिजिक्स नो डाउट किंतु एनसीईआरटी जे पढी के जायछि से तो पूरा उड़े के आसीबो एग्जाम ठीक अछि आपण हजार जिंस पढुथिबे याडू छडू हजार टा चैनल देखुथिबे याडू छडू क्वेश्चन करथिबे सेपटे हजार टा बही पढुथिबे गुडाय जिंस पढुथिबे किंतु किछि कोडू आसी नथिबो आछि कोडू एनसीईआरटी तेनु कांसेप्ट पय एनसीईआरटी होछि हम मानकर समस्त पय बेस्ट बुक हला तो पाइगले क्वेश्चन चलंतु देखंतु ठीक अछि आंसर है 0.44 रेडियन पर सेकंड इनसेक्टर क्वेश्चन नेक्स्ट देखो ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 cm what is the average resistive force exerted by the block on the bullet ऊपर क्वेश्चन आसला कोन ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg तो चलो तो एडा भी देखौ छु म आपन एडा तो समरी पळे आसला ता माने एठी आ नथिबो ठीक अछि चलंतु आउ गोटे चैप्टर जुवा देखो लॉस ऑफ मोशन ठीक अछि लॉस ऑफ मोशन रो क्वेश्चन लॉस ऑफ मोशन दा इंपोर्टेंट चैप्टर पिले छाड़ीबेनी के भी भलसे पढी के जिवे न्यूटन्स तीन जा लॉ पढी के जिवे भलसे इनर्शिया भी पढीबे ठीक अछि देखो म आपन देखौ टिके पेशेंस रखंतु सब जिंस मु देखेबी ए बुलेट ऑफ मास 0.05 देखो 04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after distance 60 cm क्वेश्चन एज इट इज पूरा छपे दिया जाय छी एनसीईआरटी बुक को धरि चंदी से माने धरि कि जेमिति क्वेश्चन अछि सेथिरे पूरा सीरियली चैप्टर वाइज बाहर करचंदी किछि परिश्रम दरकार नै डायरेक्ट कोन करो छापी दियो सेडू देखो टाइप करो क्वेश्चन टाइप करो देखि दियो एनसीईआरटी बुक रो एग्जांपल क्वेश्चन टाइप करो बस सिमिति हेज तो एग्जांपल 5.2 देखिले व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स माने एज इट इज क्वेश्चन आंसर भी डायरेक्ट तेनो आंसर मो डिस्कशन करिया दरकार नै कोन भाई कायना आपन तो क्वेश्चन देखे देली सॉल्यूशन भी देखे देली तो सॉल्यूशन पढी के आपन आराम से बुझ पारे हला नेक्स्ट क्वेश्चन सब जाय क्वेश्चन मु देखेबी टिके पेशेंस रखनु सब देखिबे A batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. A batsman hit back. चलो तो खोजिबा a batsman hit back. देखो a batsman देखो ता तळे आगा अछि example 5.4. A batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second.
ହେଲା assume linear motion of the ball ମାନେ assume ଟାକୁ ବି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି as it is ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ତ ପାଇଗଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତା ମାନେ କ'ଣ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary given the coefficient of static friction ମାନେ friction উপରୁ क्वेश्चन ଆସିଲା between the box and the train's floor is 0.15 ମାନେ determine the maximum acceleration ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବା କୋଉଠି ଅଛି determine the maximum acceleration तो फ्रिक्शन रे ही थिबो ऑब्वियसली तो चलो फ्रिक्शन को पळेबा डायरेक्ट एठी थिबो फ्रिक्शन ए चैप्टर रे ही थिबो कंजर्वेशन मोमेंटम आसला नेक्स्ट आसला फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल आसला तापर फ्रिक्शन थिबो कॉमन फोर्सेस इन मेकानिक्स हेड फ्रिक्शन आसला ठीक अछि तो फ्रिक्शन देखन क्वेश्चन determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary example 5.7 ठीक अछि छाड़ीबेनी पिले देखो एटा डायरेक्ट माने तुम पूरा प्रूफ सहित मु देखौछ एनसीईआरटी बुक टाको उठेकी पूरा देखौछ डायरेक्ट क्वेश्चन हला सब देखो एटा बोलने 40 टी या क्वेश्चन अछि मु देखे देखि नेबी पाखा भाई 30 मिनिट्स मु देखेबी जेती हला हला तापर बाकी निजे खोजि दबो काइना अछि सब जारो मु देखिछि A cyclist comes to a skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the cycle due to the road is 200 Newton and is directly opposed to the motion. How much work does the cycle do on the road? माने वर्क ऊपर क्वेश्चन आसला वर्क ऊपर जेतु आछि एटा वर्क एनर्जी रे थिबो हला लॉस ऑफ मोशन सरला एबे देखंतु वर्क जेतु अछि त एटा वर्क एंड एनर्जी रे थिबो तो साइक्लिस्ट ऊपर तो चलंतु वर्क एनर्जी देखिबा cyclist hey a cyclist come to a skidding stop in 10 meter ठीक अछि example 6.3 as it is question हला पाइ गले during this process the force on the cycle due to the road is 200 newton and is directly opposed to the motion question पाइ गले खुशी हे जानदु लाइक भी गोटे करंदु खुशी रे In a ballistic demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed 200 meter per second on a soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. माने work energy अछि ना चैप्टर तो kinetic energy आसले माने सेठी ही आस्थिबो. Then what would be the approximate percentage reduction in the speed? कोन in a ballistic demonstration. देखंतु in a ballistic demonstration त माने एई चैप्टर ही हेथिबो. In a ballistic demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 gram with speed 200 meter per second ठीक अछि क्वेश्चन हला हमें खोजुचे चारियाडे जागी जो कोनांदी कि कार्तिकेय जागी पूरा संसारटी जा बुली के आछंदी गणेश जे कोन कले शिव पार्वती को चारिपटे बुल देले कहले मु समग्र संसार बुली पळे आसिली नहीं तो हमर शिव पार्वती के एनसीईआरटी हला कार्तिकेय कोन कले चारियाडे बुली आसिले माने 1000टा बही 1000टा यूट्यूब चैनल पढिले हला ठीक अछि तो पाई गले एटा नेक्स्ट देखंतु the angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to एतिकी rpm in 16 seconds how many revolution angular speed आसला revolution आसला माने कोन ता नेक्स्ट चैप्टर हेतियो हला चलो देखंतु ता नेक्स्ट चैप्टर कोन सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन ठीक अछि कने एंगुलर वेलोसिटी पळे आसला ना तो ए चैप्टर ही हेतियो हला तो कोन क्वेश्चन थिला The angular speed of a motor wheel is increased. The angular speed of a motor wheel is increased. देखो जेड थी बॉइल कोड थी भल से प्रिपरेशन कर पिले से जो कहना कि 100टा बही पढ़िया अपेक्षा गोटे थर लाखे 100टा बही पढ़िया बेटर कि गोटे बही को 100 थर पढ़ आ से गोटे बहीटा हूँ आम एनसीईआरटी को भल से पढ़ भल से प्रिपरेशन कर एग्जाम्पल जाक कर तापर ए सब सरीला तापर एक्स्ट्रा तमे तम इच्छा जहाँ तुम टीबीडब्ल्यू कर तुम नीट रो एमसीक्यू कर जहाँ कले भी हम बुझिपार ना मैंने जो कहना बेसिक जिनस आम न पढ़ी आम 1000 जिन पढ़िया कौन हम जी पढ़ी सी पाइज ना आम कहीं न पाइबा कुआडे गला खोजीटा हूँ तो
hey, the angular speed of a motor wheel is increased from 200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds ठीक अछि आइगले क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जिवा हला नेक्स्ट देखंतु ए 400 kg सैटेलाइट पळे आसला माने को चैप्टर हेतियो ग्रेविटेशन हेतियो ऑब्वियसली a 400 kg satellite in a circular orbit of radius 2 re about the earth how much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4 re 400 kg satellite माने ग्रेविटी देखो ना केंदी चैप्टर भी केंदी फर्स्ट आसला मोशन इन ए प्लेन सॉरी फर्स्ट आसला मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तापर क्वेश्चन जक आसला मोशन इन ए प्लेन तापर क्वेश्चन आसला लॉस ऑफ मोशन तापर वर्क एनर्जी पावर तापर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ता तळगु ग्रेविटेशन माने क्वेश्चन भी सीरियली चैप्टर वाइज पकेछि माने एमिति क्वेश्चन भी मॉडिफाई हेनी माने क्वेश्चन भी अल्टरनेट करिनी नंबर भी पूरा सिक्वेंशियली पकाइछि हला तणु माने क्वेश्चन करिया पय भी ताके परिश्रम टोटली करि नाहंदी टिके भी परिश्रम हेई नाही 400 केजी सैटेलाइट ना तो चलो हम देखिए 400 केजी सैटेलाइट कोठी अछि 400 केजी सैटेलाइट मजा आसुछि ना नहीं पिले एक्चुअली एनालिसिस केमिति करा जाय एई भली एनालिसिस करा जाय ठीक अछि ना पूरा क्वेश्चन आपन को देखा देली क्वेश्चन कोठी अछि आंसर कोठी अछि सब डिटेल अछि एरे हे एग्जांपल 8.8 देखंतु a 400 kg satellite is in circular orbit of radius 2 re तापर से 4 re गला तो व्हाट आर द चेंजेस इन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज अछि हला तो से कोन पचा जेटे हला पचार दै छला हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट इट टू सर्कुलर ऑर्बिट 4 re ओके नेक्स्ट देखंतु a structural steel rod has a radius of एतिकी लेंथ दे दी एतिकी यंग्स मॉडुलस आसीगला स्ट्रक्चरल स्टील तो कैलकुलेट स्ट्रेस पचे यंग्स मॉडुलस आसीगला माने कोन सॉलिड को पळायार अछि कायना हम देखंतु ग्रेविटेशन सरीगला तो सरला चैप्टर तापर हम सीधा पळेबा नेक्स्ट फिजिक्स पार्ट 1 सरला ए पार्ट 2 को जिबा 11th क्लास रो पार्ट 2 बुक तो फर्स्ट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हला माने से टोटली चेंज करि नाही से चैप्टर वाइज भी सीक्वेंशियली जाईची देखो क्वेश्चन a structural steel rod has a radius of 10 mm and length एतिकी यंग्स मॉडुलस दे दिछि एतिकी हला स्ट्रक्चरल स्टील रॉड पाई गेला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देछि तो ए ग्राफ देटा खोजि दा चलो कोठी अछि ए ग्राफ देटा खोजि देला म मिलि जो सब अछि एठी सब अछि हला कोआडे किछि बुलै बाकी किछि नै सब डायरेक्ट क्वेश्चन देखो से पूरा थोइ दैछन पूरा एग्जांपल जाको से थोइ दैछन एटा कोन एक्सरसाइज हेड एक्सरसाइज क्वेश्चन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल्स ए एंड बी दे देला तो ऊपर क्वेश्चन पका देला ठीक अछि हल्ला कोन हला देखि देबे तापर इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एतिकी द डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर दे देला माने एटा फ्लूइड मैकेनिक्स पळे आसला माने ता नेक्स्ट चैप्टर से चैप्टर और नथिबो एटा व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट प्रेशर ऑफ ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक तो केते देला एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देला डेंसिटी दे देला 10 मीटर बिलो तो चलन तो एटा खोजबा कोडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सॉलिड सरला एबे फ्लूइड तो जन्ना किमिति सीरियली माने गोटे पर गोटे चैप्टर रो क्वेश्चन सी पके जाइछन्ती आरएचटी एग्जाम रे हेड एग्जांपल 10.2 व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक हला स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक ए एग्जैक्ट क्वेश्चन दा एटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपन देछि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ता काले आपन मन रखि नथिबे तनु से लिखि देछि हला नेक्स्ट गिवन द डेंसिटी ऑफ सी वाटर दे देला एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देला 1000 मीटर इन ओशियन फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो of एतिकी 20 सेंटीमीटर into 20 सेंटीमीटर ऑफ ए सबमरीन 20 सेंटीमीटर तो चलो 20 सेंटीमीटर खोजिबा 20 देखो 20 सेंटीमीटर हला पाइले at a depth of 1000 meter in an ocean what is the absolute pressure gauge pressure find the force acting on the window of area 20 centimeter and 20 centimeter submarine at this depth बुझले तो क्वेश्चन सब एनसीईआरटी रो आछि पिले सब एमिति आउरी देखैबी मु in a car lift compressed air exerts a force F1 car lift माने एटा कोन आसिला पास्कल्स लॉ पळे आसीबो
है on piston having a radius एतिकी the pressure is transmitted to a second piston of radius एतिकी if the mass देदेला एतिकी pressure तो पळा आसला in a car lift compressed पास्कल्स लॉ तो पास्कल्स लॉ एठी थिबो कोठी हाइड्रोलिक मशीन्स पळा आसला पास्कल्स लॉ बुझले एठी पास्कल्स लॉ एटा तो in a car lift देखंतु हला in a car lift बुझले ए क्वेश्चन दा बुझ पारले तो तेणु क्वेश्चन कोठु आस्थिला सब जाक एनसीईआरटी रु पड़थिला भाग्य भलो थिले एसएसबी टीजीटी रे मध्ये एनसीईआरटी रो किछि क्वेश्चन आपन मिल जाय पारे बुझले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 ए फिगरटा देखिदेले जानदा कोठी अछि क्वेश्चन देखंतु ए मेटालिक ब्लॉक ऑफ एरिया एतिकी इज कनेक्टेड टू एतिकी मास भाया स्ट्रिंग दैट passes over an ideal pulley considered massless and frictionless a liquid with a film thickness एतिकी placed between block and the table where when released the block moves to the right with a constant speed of एतिकी देखंतु आपण जानि परथबे जो एनालिसिस रे प्रति चैप्टर रु बुझले प्रति चैप्टर रु दुईटा तीनटा क्वेश्चन आछि प्रति चैप्टर दुई तीनटा ले क्वेश्चन आछि बुझि पाले तेणु को भी चैप्टर आपण कहि परिबेन जे इंपोर्टेंट न हो सब जागा चैप्टर इंपोर्टेंट सिलेबस रो अछि माने से इंपोर्टेंट हला जदि अधिक इंपोर्टेंट आपण देखिबे ताले ता पय मो गोटे अलगा वीडियो आनिबी अधिक इंपोर्टेंट माने फिजिक्स रो अधिक इंपोर्टेंट माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक आउ फिजिक्स रो केमिस्ट्री रो मैथमेटिक्स रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक जदि आपण चाहउछन ताले सेटा भी कमेंट रे मते लिखंतु मो ता ऊपर पर्टिकुलर गोटे वीडियो नेकी आसीबे देखिया बोल तो सब जागा इंपोर्टेंट किंतु आपण जदि पर्टिकुलरली देखिबे कि कोन इंपोर्टेंट टॉपिक अछि ताले भी मु ता पे वीडियो नेकी आसीबे चलो देखियो आपण से फिगरटा देखि देले जणा पड़जो एटे ई फिगरटा थिला ना कोन थिला क्वेश्चन ए मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर a metal block of area 0.10 meter square is connected to एतिकी हला एग्जांपल 10.9 पाइले क्वेश्चन नेक्स्ट चलो 37 क्वेश्चन नंबर 37 द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल ऑफ ए रेडियस एतिकी फॉलिंग थ्रू ए टैंक एतिकी कंप्यूट द विस्कोसिटी माने कोन माने फ्लूइड प्रॉपर्टी एटा रेजिस्टेंस फ्लूइड रो रेजिस्टेंस तो विस्कोसिटी को जाउची तो विस्कोसिटी ऊपर क्वेश्चन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल तो एई चैप्टर हिं थिबो द टर्मिनल वेलोसिटी देखंतु the terminal velocity of a copper ball of radius 2 mm falling through a tank एतिकी compute the viscosity ठीक अछि क्वेश्चन पाइ गले ए चैप्टर रो पाखा पे 4 5 टा क्वेश्चन पळे आछि नेक्स्ट ए फ्लास्क contains argon and chlorine in the ratio एतिकी the temperature of the mixture एतिकी टेम्परेचर ऊपर क्वेश्चन आसला माने एटा काइनेटिक रो आस्थिबो मॉलिक्यूलर मास दे देला obtain the ratio of the root mean square velocity आसला root mean square speed माने vrms माने एटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आस्थिबो ठीक अछि तो चलो से चैप्टर खोजिबा जाई ए चैप्टर तो मिलिबन तो एटा को चैप्टर आस्थिबो देखंतु थर्मल प्रॉपर्टी रो आसीनी क्वेश्चन किछि थर्मोडायनामिक्स रो किछि क्वेश्चन आसीनी काइनेटिक थ्योरी रो क्वेश्चन आसी तो काइनेटिक थ्योरी को चलो डायरेक्ट पळेबा काइनेटिक थ्योरी टा भी इंपोर्टेंट एरिया बुझले काइनेटिक थ्योरी पढिबे A flask contains argon and chlorine in the ratio 2:1 by mass. The temperature of the mixture एतिकी obtain the ratio of the जहां भी एट देछि ठीक अछि तो एग्जांपल देखिले तो ए क्वेश्चन दा एज इट इज आछि एथिरे हला नेक्स्ट 39 क्वेश्चन नंबर 39 which of the following functions of time and their property एटा पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन आछि हमरो ओसिलेशन को पळेबा गोटे क्वेश्चन आछि काइनेटिक थ्योरी रु तापर देखंतु ओसिलेशंस को पळेबा एठी क्वेश्चन अछि एडी चारटा ऑप्शन देथिला हना नहीं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन रिप्रेजेंट द पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक देथिला हला तो ए क्वेश्चन दा पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक ऊपर ए क्वेश्चन दा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ए बॉडी ऑसिलेट्स x = 5 cos t cos 2 pi t plus pi by 4 हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन ना सेही चैप्टर रो ए बॉडी ऑसिलेट्स विथ सिंपल हार्मोनिक ये तो देखंतु ए बॉडी ऑसिलेट्स देखो ए बॉडी ऑसिलेट्स विथ सिंपल हार्मोनी अकॉर्डिंग टू एतिकी x = 5 cos 2 pi t plus pi by 4 हला क्वेश्चन पाइ गले डायरेक्ट क्वेश्चन
Next, question number 14. What is the length of a simple pendulum which ticks seconds? Direct question. Ready. What is the length of a simple pendulum which ticks seconds? ହେଲା ପାଇଗଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଭଲସେ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ ଏନସିଇଆରଟି ରୁ କନସେପ୍ଟ ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଏନସିଇଆରଟି ରୁ ସରିଲା ପରେ ଟିବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆରଏସଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯା କରନ୍ତୁ ଆରଏସଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିବ ଓଏସଏସଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯାକ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଅନଲାଇନ ରେ କୋଉ ସୋର୍ସ ରୁ ପଢିଲେ ପଢନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ନିଟ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ବୁଝିଲେ ନା ଆଗ ଏତିକି ପ୍ରାଇମେରୀ ବେସିକ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏତିକି କରିବେ ତାପରେ ଯେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା କରିପାରିବେ ସରି estimate the speed of sound in air at a standard temperature and pressure ହେଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବି ଅଛି standard temperature and pressure ଏଟା ସରିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର oscillation ସରିଲା wave କୁ ଯିବା ଏବେ wave କୁ ଯିବା estimate ପଚାରିଥିଲା estimate ଦେଖନ୍ତୁ estimate the speed of sound in air at a standard temperature and pressure the mass ଯେତିକି ହେଇଛି ହେଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବୁଝିଲେ 42 ତ ଏମିତି ଆପଣ କଣ ଦେଖେଇବି ଦେଖ ଏମିତି କରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ 30 ମିନିଟ୍ସ ହେଇଗଲା ତ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦେଖେଇବିନି क्वेश्चन खाली पढ़दबा आपण देखिदेबे को चैप्टर मु खाली कहि देबी आपण सेटा देखिदेबे टू सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्ले धा ए सब नोट देछि सितार स्ट्रिंग टू सितार स्ट्रिंग ए चैप्टर ही आसीबो वेब चैप्टर रु जेतु आसी तो वेब चैप्टर रु ही आस्थिबो एटा टू सितार स्ट्रिंग्स तो देखंदु two sitar strings A and B playing the note dha are slightly out of tune and produces beats of frequency 5 hertz हला पाइगले क्वेश्चन तो एमिति करिवे if 10 to the 9 electrons move out of a body to another body every second how much time is required to get a total change of 1 coulomb on the other body हला तो देखंतु एमिति रे हमर ए चैप्टर सरी गला हला वेब सरला तो ए हमर फर्स्ट ईयर बुक सरला एबे कोडी जिबा हम सेकंड ईयर बुक तो 12th क्लास बही को जिबा 12th क्लास रो देखंतु 12th क्लास एटा 12th क्लास रो फिजिक्स की जिबा फिजिक्स फर्स्ट बुक कोन अछि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स तो चलंतु एठी हम देखिबा एठी पाइ जिबा ऑन देथिला 10 to the power 9 electrons ना जो गुडा बड़ क्वेश्चन जाको सेटा से छाडी देछि छोटो क्वेश्चन जाको से पके देछि देखंतु if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second how much time is required to get a total charge as it is exact question आछि ठीक अछि तो सिमिति सब जाको क्वेश्चन how much positive and negative charges is there in a cup of water weighing 250 gram देखंतु ता तो क्वेश्चन दा how much positive and negative charge is there in a cup of water हला देखिले क्वेश्चन तो एमिति बाकी सब जाय करिवे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हला ता पर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नाम पढ़ी दूचे आपण देखि देबे on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in the air of is 0.2 newton what is the force on the second sphere due to the first हला एटा भी से इलेक्ट्रोस्टैटिक रे आपण पाइ जिवे नेक्स्ट ए पॉइंट p is located 9 cm away from a point charge माने एटा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक हला obtain the work done एटा वर्क बाहर करिवे obtain the work done तो वर्क बाहर कर देबे नेक्स्ट देखंतु ए 900 पिकोफाराड कैपेसिटर जेहेतु फिगर टा देछि त म एटा देखे दोछि आपन पिकोफाराड माने कैपेसिटेंस माने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस रो क्वेश्चन एटा हला इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस देखो एटा फिगर देथिले माने शीघ्र बाहर करयाटा इजी हिजो तनु बाकी जाको मु तो कहिली एति जा माने बाकी भी जहा थिबो आपन खोजि देबे से भितरे हला तेनु बारंबार मु सब बेले कहे कि एनसीईआरटी प्रिपरेशन करो एते कहिला पर भी एते सब वीडियो रे मु सब बेले एनसीईआरटी प्रिपरेशन करो कहूची जदी करबोनी तो चाकरी अन्य माने नेबे आपण नै परिबेन
ए क्वेश्चन हला ए 900 पिकोफाराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हला ए गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीला एमिति सब जगह देखिबे एडा भी स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हला एडा भी देखिबे नेक्स्ट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स देखो पिले नेटवर्क आसी एग्जाम रे हला किमिति सी आसी एग्जाम रे देखो ना गोटे क्वेश्चन आसला हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू बीसी माने बीसी ब्रांच रे करंट केते गला बीसी ब्रांच माने एपटे तापर क्वेश्चन आसला बीसी ब्रांच पचारथिला तापर आसला कोडी ना एडी ब्रांच रे केते माने एडी ब्रांच माने एटा रे केते गला सेकंड क्वेश्चन तापर कोन आसला फ्लोइंग थ्रू बीडी ब्रांच माने एटा आसथिला बीडी ब्रांच कोटा एटा तीनटा क्वेश्चन से पचारला हला तो चलो तो तीन जा क्वेश्चन मु गोटा देखे दूचे आपन इजी हे जिवो एटर नाही या गोटे चैप्टर थिबो करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक अछि करंट इलेक्ट्रिसिटी रो थिबो एटा नेटवर्क ता देखि दबा इजी होबो तीन जा क्वेश्चन गोटा करे अछि हला एटा एक्सरसाइज क्वेश्चन दा बोलते हां एटा देखंतु डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क ईच ब्रांच रे पचा थिला बीसी एडी आउ बीडी ठीक अछि एटा डी हला सेम क्वेश्चन बुझ पाले तो बीसी एडी बीडी तीनटा क्वेश्चन हैला तो ए भले आपण देखिबे सब क्वेश्चन किमिति आस्तिला ते पर नंबर इफ द मैग्नेटिक फील्ड माने एटा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर क्वेश्चन इज पैरेलल टू द पॉजिटिव y axis and the charge particle is moving along the positive x axis which way would the Lorentz force ऊपर क्वेश्चन आस्तिला b for an electron एटा भी अछि देखिबे आ मते कहूनी टाइम बहुत हेलानी 35 मिनिट्स बाकी तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एटा भी आसला मैग्नेटिक फील्ड ऊपर क्वेश्चन आसला ठीक अछि तो लास्ट बाकी जो तीन चारटा चैप्टर रहले ता ऊपर क्वेश्चन अछि कोन consider a tightly wound 100 ton coil of a radius 10 cm carrying a current of 1 ampere what is the magnitude of magnetic field एटा भी आसला नेक्स्ट FLT रो दे देला तो एटा डायमेंशनल एनालिसिस ऊपर क्वेश्चन आसला एटा आपण इजीली कर देबे नेक्स्ट कंसीडर द एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए टेनिस बॉल as it falls to the ground and bounces back directions of which of these changes in this process hala next if the earth is at the 1/4 of its present distance from the sun the duration of the year will be माने जो light year ऊपर क्वेश्चन hala distance earth to object or distance तापर आसला 59 the temperature of an ideal gas is increased from 120 K to 480 K if at 120 K the root mean square velocity of the gas molecule जेती root mean square कहितली गोटे क्वेश्चन आउट क्वेश्चन आछि ता ऊपर हला तो root mean square सेठी अछि ताई देखि देबे a wire of a certain material is stretched slowly by 10% its new resistance and specific resistance becomes respectively wire टा को stretch करा हला ठीक अछि तार न्यू रेजिस्टेंस और स्ट्रेच्ड रेजिस्टेंस केते आसीबो एटा भी अछि आपन रेजिस्टेंस जे देखि देबे हला रेजिस्टेंस माने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थिबो रेजिस्टेंस तापर आसला एटा कोन केमिस्ट्री जोटा कि हम ऑलरेडी 61 रु 100 नंबर क्वेश्चन पर्यंत हम ऑलरेडी वीडियो करि सारसे देखि सारसे समस्त ठीक अछि जे देखि नांदी से प्लेलिस्ट जाकी देखि देबे तो आज रो वीडियो जदि आपन समस्त भल लागिथिबो ताले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके धन्यवाद थैंक यू।